So we will go through the mangrove ecosystem. Now each year they are asking a question from this particular topic, the mangroves. Each year one question we expect from the mangrove. Then the question arises, then why they are asking the question from this particular topic? Because mangrove is unique ecosystem and unique forest. So being unique, that's why they are asking. So this is the reason they are asking each year one question. So we will go through the mangrove ecosystem. First of all, mangrove ecosystem in short, if I go through the mangrove ecosystem, so let me point out the bullet point like this. Mangrove is what? Is a swampy forest. Is a what? Swampy forest. First of all, swampy forest. This is also called as what? Ecotone. Also called as ecotone. Aged effect. Also, aged effect will found in this particular region. One of the richest biodiversity. One of the richest biodiversity also found in this particular region. So that means mangrove is in what? Ecotone, swampy forest area. Aged effect also found in this particular forest. Now what is exactly the aged effect? Just a minute. See, mangrove is called as ecotone because transition zone. So ecotone means what? Transition zone. And everybody aware of the fact that ecotones means the transition zone. So that's why, and that transition zone also called as the what? Ecotone, is not it? This one also fine. Swampy forest, why we call swampy? Because of always that region remain wet versus सारा केमती थाए wet condition थाए पानी जमी की थाए tidal forest आपको हमें कहूँ then tidal forest कहीं कहूँ जो ये region रो tide ऐसे सो बोले है ना. So this is also another cause that we call the tidal forest. Mangrove also called as the tidal forest. So because what? Tide area is sadharanatah mangrove dekha jaye. Those area comes under the influence of tide. These are the conditions. That means what? Certain. And एथिरे कौन देखा जाए कि mangroves are diversity बहुत ही ज़्यादा mangroves रे diversity देखा जाए. जाओ मैं हिंताल बनाओ कोचे न mangroves. If someone will ask you okay, what are the conditions required for the growth of mangrove, so mangrove being on what? Ecotone, this one need a what? Swampy condition. That means the condition for the mangrove growth is that it should be a mud flat. It should be a mud flat. That means कादो area हितवा दरकार. It should be a tidal area. You got a tidal influence हितवा दरकार. The salinity of the water should be like what? You may say like 15 to 35, like this one, that is the PPT, parts per thousand. Salinity. Humidity would be high, that means high humidity needed. Rainfall is like 100 centimeter is enough, because this forest does not depend on rainfall, rather it depends on tide. Okay, that's why tidal forest आपको कहा जाए mud flat. This one is prerequisite condition, or the condition need to be satisfied. Salinity, temperature, as you can say temperature 27 degree to onwards 27 degree plus. Humidity, that would be good humidity. When I say humidity, obviously it could be good humidity like Chilika, Vitarkanika, all this region, they are humid region because of the proximity or the close to the water body, large water body. So these are the condition. And what creeks should be there? Creek, tidal creek, जेमती हमारे को जे कोरी creek, है ना? Then we are also disputed creeks there. That is the what? Sar Creek. That one also disputed creeks with Pakistan. So creeks are also there. So creeks kuda dekha jaye हमको. That means
mangrove ebe ame dekhiba. So that is what they are grow in salt loving plants bi ame taku ko mangroves are plants tidal mu कहଥିଲି तुमको tidal area देखा जिवो they are halophytic halophytic अर्थ जो plant salty water रे बंची पारंती सेमान को जे halophytes hydrophytes कहले जो माने water रे बंचंती बस को जे hydrophytes halophytes कहले saline water simple हम कहबा saline water रे जो plant गुडा grow करता है so these are mangroves are basically halophytes that means हम आपको कहबा halophytes बा salt loving they lives in unique environment between the land and sea जोटा कि मु तुमको कहतली ecotone or this would be also called as the estuary this is also what estuary तो आपको हमें basically estuary otherwise you may say ecotone तुमको सारी estuary काहे कहबा कारण एटा swampy area एटी सबले टाइड ऐसे पानी रुहे तो either you may call it the ecotone or estuary no issue किछि भी प्रॉब्लम नहीं है ना कहना एक जोटा estuary सेटा ही ecotone ecotone रे कोन देखा जाय एज इफेक्ट देखा जाय both density and number of the species will be more and variety also mangroves represent a what littoral that means the near sea shore सबले littoral को forest को जाय because these forests are eventually grow in the coastal region that is why they are also called as the littoral forest mostly they are evergreen ध्यान से मार्को this is very important they are evergreen not mostly they are evergreen if somebody will ask they the whether they are evergreen बिल्कुल से माने evergreen they are littoral because माने समुद्र कूल एरिया रे देखा जाए है ना they are what they are estuary ecotone intertidal area means let's say tide high tide ए जे आसुची high tide ht and low tide होची lt तो एई जो भीतर एरिया टे दैट मींस हमें कहबा हाई टाइड और लो टाइड मझे एरिया को हमें कहूचे इंटरटाइडल एरिया लेट्स से दिस वन इज इंडिया एंड लो टाइड कले पानी छाडी गले भाव तमे बालेश्वर को बुलिया पे जाइछ चांदीपुर बीच पानी छाडी गले एई जे आसी गला भटा टाइम रे एफ जाको हम कहूचे एफ टाइड टाइम रे पानी पुनी ऊपर को आसला तले एई जो जोनटा होची इंटरटाइडल एरिया तो मैंग्रोव सबले इंटरटाइडल एरिया रे ही हेता है then why because that is the zone for the silt deposition so there silt मिलता है and what एथरे हमें देखिबा देदी स्प्रिंग टाइड्स के अधिक আছে तो मैंग्रोव्स बेसिकली सिंपल कहबे तमे मार्सी को जे एथरे लागून्स एरिया देखा जिवो एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साधारणतः हमको याकू कोन को जे एस्टुअरीज है ना तो एस्टुअरीज रे देखा जो मड फ्लैट थाए टाइडल क्रीक ऑलरेडी मु कहि देची बैकवाटर लो लाइंग एरिया लागून जमती चिलिका चारिपटे भी मैंग्रोव किछि मात्रा तो देखा होची है ना तो लो लाइंग एरिया रे देखा जिवो एस्टुअरीज मड फ्लैट टाइडल क्रीक है ना बैकवाटर मार्सेस लागून और साधारणतः तुमको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन रे देखा जो दैट मींस इफ आई ड्रॉ the world map let's say this was the 0 degree up to 35 and 35 both the hemisphere this zone is known as the mangrove area so dunia mangrove area this is the best mangrove area or that is I will say the overall your maximum that what mangroves comes in this particular region that is 35 to 35 the maximum tidal comes in this particular region done everyone so next slides को हम जीवा mangroves are highly productive ecosystem now productive from meaning kono highly productive means goods and services again the same trick as I said goods and services रे same आसीबो तो services रे if I say services number of services they are providing प्रथम कथा कोन same nutrient cycle but nutrient cycle carbon sink करू huge carbon sink करे then कौन करिवो क्लाइमेट को मॉडरेट करिवो मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट नेक्स्ट कौन हे परिवो रेन करिवो काना ह्यूमिडिटी रहिवो evapotranspiration होउची so plants also doing the what evapotranspiration so through the transpiration they are also ejecting moisture into the atmosphere that will condense and rainfall will occur rainfall abo moderation of climate carbon sink then also I will say what in terms of services you may say the oxygen also they are providing oxygen है ना pollution को control करूची again I would say the pollution control करूची चाहे से water pollution soil pollution air pollution they are also controlling so these are the services when I say goods kono like your crab konkoda fishes shrimp
जो चुंगड़ी माछ श्रिम्स लोबस्टर जो बागदा चुंगड़ी जहाँ को हम कहूचे देन अदर फिशेस आल्सो प्लस बायोडायवर्सिटी रे तमे लिखियो क्रोकोडाइल रहउची मैंग्रोव रे यू विल हैव किंग कोबरा रहइबो किंग कोबरा देन क्रोकोडाइल जैकेल देन टाइगर ये तो सब रहउचंती ना so they are living that means ये गोटे यूनिक बायोडायवर्सिटी हमको देखा पड़े बर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स देखा जिवो देन हमको फ्लोरा स्पीसीज भी देखा जिवो फ्लोरा स्पीसीज बहुत सारा हमको देखा जिवो एंड आल्सो यू विल सी द fauna both flora and fauna species both you can have in this mangrove तो मैंग्रोव रे हमको कोन फ्लोरा एंड fauna both we will have in this particular zone जदि तमे fauna कथा कहिबो लेट्स से if you are having more interest to talk about the fauna of that particular region fauna is so many type of fauna is that like मु कहली के fauna रे तमको जेमति कि किंग कोबरा देखा जबो क्रोकोडाइल्स देखा जबो डॉल्फिन देखा जबो देन व्हाट कोब्रास देखा जबो तमको जेते प्रकार कोब्रा अछि डिफरेंट टाइप ऑफ कोबरा देन तुमको फिशिंग कैट देखा जीवो कैट तो कैट बिग कैट भी देखा जीवो लाइक टाइगर है ना देन क्रेन्स देखा जीवो जेते प्रकार तुमरो बगो अछि क्रेन्स है ना देन अदर बर्ड स्पीसीज देखा जीवो प्लांट स्पीसीज रे हम जोटा फ्लोरा रे देखियो जदी साधारणतः तो हमको देखा जीवो व्हाट दैट इज द राइजोफोरा बेसिकली वी विल हैव राइजोफोरा स्पीसीज जाको हम मैंग्रोव स्पीसीज बे सुंदरबन कहूचे राइजोफोरा तो ये तुमको बेसिकली देखा जीवो अपार्ट फ्रॉम दैट वाइल्ड बोर देखा जो बारहा कहूचे हमें डियर देखा और डियर एठी बहुत देखा जाए है ना डियर देखा तो एमती बहुत सारा हमको स्पीसीज देखिया मिलबो इन दिस पर्टिकुलर रीजन fauna and flora रे जदी हम कहबा बट दे आर मैंग्रोव्स आर लार्जली नोन फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना कौन पई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज नॉट द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल मगर होची हमरो दांत मनकबो मगर होची लार्जेस्ट क्रोकोडाइल कहले जे फ्रेश वाटर जोटा बस खाली तांकर जो माने कोन कहलो बिग रो जो थंटर शेप टिके अलगा थाए टिके चौड़ा थाए मगर रो सॉल्ट टिके नैरो थाए आ पूरा जोटा घरियालटा पूरा एमते नारो थाए तो बस तांकर ई पोर्शन को फ्रंट पोर्शन को नहीं कि ना सब दिया जाई थाए जाबियो तो ये हमें देखिले एथरे तुमको डॉल्फिन देखा जाउ जंती भीतर कनिका रे डॉल्फिन देखा जाउची ना तो डॉल्फिन भी इंटीग्रल पार्ट ओके जाबियो तो दैट मींस हम कभी ये गोटे इकोसिस्टम जहार साधारणतः जो ट्रीज थाए 8 to 20 मीटर्स हाइट हो हाइट बेसी हुए नहीं दे आर लाइक श्रब्स बेसी हाइट हुए नहीं बेनिफिट्स तो बहुत सारा अछि मैंग्रोव्स जेमती तमरो सुनामी आसिला बेले पानी को अटकौची साइक्लोन आसिले विंड रो कोन फ्रिक्शन जनरेट करो तो विंड स्पीड को बैक करती बिकॉज ऑफ द व्हाट फ्रिक्शन सो आज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द हाइट अधिक गछर हाइट अधिक हो कि बस सिंपल आई वुड से द डेंस फॉरेस्ट because of the dense forest that will prohibit the water plus wind ro friction develop karigi taku break karibo so that could be also one of the reason that mangrove is having benefit in the coastal region apart from that coastal erosion ko banchauchi है ना गोटे unique ecosystem establish करूची people are getting different type of fishes है ना prawning देखा जाउछ on the ground commercially हम fish चाष भी होची चुंगड़ी चाष भी होची then since mangroves are located between the land and sea so they are also called as ecotone already मु कहि देछि तमको ecotone estuary एठी साधारणतः श्रब्स देखा जिवो माने गछर हाइट बेसी न थाए ये जो तमरो 8 to 20 लिखै छि दे आर रेयरली बट ज्यादातर जति देखबी मु 8 to 10 meter trees there maximum trees are found so they will becomes in the what shrub category not the large tree but they are evergreen but the point is to be mangroves are the evergreen they prefer the brackish water or you may say the coastal water that is the coastal water itself brackish water I would not say it's a marine water or fresh water because that could be estuary region means it would be brackish water mangroves vegetation facilitate more water loss so leaves are thick contained salt secreting glands so that's माने जो जेहेतु एटा लुनी पानी रे बंचू जे गछ गुडा तो तांकर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट टाकू से कोन करे
तार जो सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स अच्छे तादर से बाहर कर दिए सो दैट पत्र को चोबैले तुमको लुणिया लुणिया लगे से मैंग्रोव गछ को जदि तुम गोटे पत्र को छिंडी आड़ी चोबेब लुणिया लगे एथि कारण से पत्र तले तार सब कौन थाए लेट्स से गोटे लीफ अच्छी ये गोटे लीफ आम देखिले ए लीफ रो जो ऊपर पोर्शन रे सॉल्ट ग्लैंड न थाए ध्यान मन को आर जो बिलो द लीफ पत्रटा को उल्टे देखो टिके व्हाइट व्हाइट देखा जो तुमको कौन पे कारण से सॉल्ट गुडा डिपोजिट होके थाए से मैंग्रोव गछ देखो छोट छोट पत्र हुए जिते भी मैंग्रोव अच्छी देयर लीव्स आर वेरी स्मॉल छोट छोट लीफ हुए बट टिके थिक थाए एंड ऊपर पोर्शन रे तो तुम जानछो काना जो ग्रीन पिगमेंट अछि ता द्वारा कोन फोटोसिंथेसिस हबो आ तळ पोर्शन रे कोन के तांकर सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड अछि सो दैट से एक्स्ट्रा सॉल्ट को सिक्रेट करती बस ये अछि तार मैकेनिज्म. Here you can see the mangrove forest. Here is the low tide mu कहथि low tide and high tide. So this is the zone in which the trees are growing. Okay, so that is the zone, intratidal zone, or I would say what, intratidal zone. Adaptation mechanism. Now mangrove is one of the best known nature जो mechanism ना जदि हम देखिबा mangrove is the world class के नेचर निजो को एडजस्ट करे केमिति नेचर माने कहते कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर डू एडजस्ट इटसेल्फ केमिति जेमिति कि तमर देखो न्यूमाटोफोरस दिस वन आल्सो कॉल्ड एज द ब्लाइंड रूट्स ध्यान से मरकबो दिस वन आल्सो कॉल्ड एज द ब्लाइंड रूट्स हियर आई विल शो यू these are the pneumatophores you can see this one is the pneumatophores these are the blind roots एमन को कोन कहचे ब्लाइंड रूट्स न तो ब्लाइंड रूट्स कोन पे कारण ये तळे तळे माटी रो तळे तळे मेन चेरोटा अछि सेथुर सब एम्ति बाहरी छि कंटा कंटा हे कि बाहरी छि एमन को कहचे pneumatophores हियर यू कैन सी द क्लोज टू द वाटर these are the pneumatophores तुमको ये रूट रो काम कोन ऑक्सीजन निये से as the anaerobic condition is prevail over this particular region so these roots they are getting oxygen from the atmosphere because of the ground is having what anaerobic condition as the ground is having anaerobic condition that is why these roots they are getting oxygen for the plant or for the trees so this is the unique mechanism no other plant on the earth surface is having such kind of mechanism that is the blind roots mechanism only mangrove is that is why this one is unique and they are asking frequently so pneumatophores is what that is the breathing root or the blind roots they breathe they take the oxygen from the atmosphere for the breathing purposes they are coming from the what main root follow the ground and they will come out oxygen nava pai se tara karano namu tom कहली why oxygen because of the that is what anaerobic condition prevails there that is why oxygen shortage है तांको तने करके ये जो breathing roots रो काम मन रखो जे तुम पछे breathing roots कोन that is the pneumatophores next comes to the another important thing stilk root now this is also one of the unique root of this tree here you can see गच्छ एठू स्टार्ट हिची गच्छर एठी देखो ये कोन चेरो ऊपर गच्छ हिची लाइक जेमति कि कहते कि पंझा ऊपर रहिची like see this one here from here the trunk start the main root trunk here गच्छर जाको हम कहचे गंटी trunk this one is the root तो here is the soil level तो गोटे पंझा बुलिया हे कि गच्छटा ऊपर उठुचे तो ए मान को कहजे stilk root these are the pneumatophores देखो main root रो बाहर माटी तळे जाउची main root pneumatophores okay done everyone this is the knee root these are the knee roots here you can see these are the knee roots तमे तो देखि परिबो ने मैंग्रोव जे देखिबे बुलिया को जाई तो मु तो देखि छी हम घर चार कोटे मैंग्रोव है ना तो these are the knee roots you can experience the knee roots if you get chance then you can also visit Rhizopara to experience such kind of phenomena they are unique phenomena that they have adapted these are the knee roots okay knee roots and these are the pneumatophores and this one is the stilk root on which the tree is based here you can see this one portion is stilk root and here is the water okay endowed means what quality and these stilk roots are endowed with pores through which the atmospheric oxygen enter into the roots that means a stilk root knee roots pneumatophores they are performing one thing what oxygen they are taking what oxygen from the atmosphere now comes to the vivipary is the unique phenomena and unique quality of this forest दुनिया रे शायद ये गोटी ही गछ that is the what mangrove जहार germination
माने जो गछरे फलटा जेतरे झुली थाए जर्मिनेट हेकी तळकु खसे खसिकी पुणी आउथरे पडिकी उठिबो जेमती फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस वन दिस फ्रूट है ना दिस फ्रूट और सीड आई वुड से द सीड ये जर्मिनेट हेला परे खसिबो तळकु तापर जेमिति तळे पडिबो पुणी उठिजिवो पुणी गछ आउथरे उठिबो तुमको ये मेकानिज्म केमिति अडॉप्ट कला दिस इज द नेचर नेचर अडॉप्ट कर देछि ये सिचुएशन को नेचर जानिछि कि जदि से फलटा पड़ीज लुणी पानी रे से जर्मिनेट हो पार ना तेणु करी गछ उपर जर्मिनेट करदेव नेचर ताकू माने गछ ताकू अडॉप्ट कर देछि कंडीशन से जानी ना कि फलटा पड़ीगला जर्मिनेट हो पार ना तेणु करी ये जो सीडटा गछ उपर रहीकि जर्मिनेट हो वंस इट ड्रॉप्ड into the water into the saline water that will again come out in form a new species here I will show that one let's say पुणी गोटे गछर ऊपर से नहीं जीवो and okay these are the Rhizopharas these are commonly known as what Rhizopara so vivipary means what this is unique mechanism through its reproduction that is the what process of reproduction simple I will say the unique way of reproduction done everyone बुझा पड़छ समस्त को vivipary still root knee root Pneumatophores everyone fine with this yes sir है ना सो दिस इज यूनिक मेकानिज्म ता द्वारा पुणी गछटा पुणी आउथरे हिजो बस एति मु तुम कली है ना तुम कल कि ये रो काम होची विविपारी अदरवाइज तळे सालाइन वाटर होची ना जर्मिनेट हेई परिबो नाही नाउ एबे हम देखो टाइप्स ऑफ मैंग्रोव साधारणतः मैंग्रोव्स को कलर बेसिस रे रेड ब्लैक व्हाइट एमती करा देची एमान को कॉमनली दे आर कॉल्ड एज द राइजोफेरास जदि तुमको वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ फॉरेस्ट्री तेणु करके जेहेतु ओपीएससी गोटे कॉमन एग्जाम सो दे वुड नॉट आस्क यू ए मतलब लेट्स से हेंताळर साइंटिफिक ना कोन दे वुड नॉट आस्क बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट फॉर द फॉरेस्ट्री only or the agriculture student okay this one is a common exam so obviously they will ask you the Rhizopharas okay what is the common name of mangrove that is the mangrove that would be the Rhizopara so this one is enough okay here you can see the red mangroves how they looks like these are the blacks these are the Pneumatophores here is the steel root you can see है ना तो mangroves देखा जो एमती पूरा तुमको देखा जो ना distribution of the mangroves around 40% of the world mangroves cover found in Southeast Asia so Southeast Asia is the heart of the world mangrove that is the Indonesia Malaysia Vietnam India Philippines all this coastal land including your China but this coastal region is world largest including your Myanmar Bangladesh as well because Sundarban is there Sri Lanka also India accounts only 3% of the total mangrove of South Asia so 15.9 million hectares of the mangrove forest in the warm water tropical ocean it was talked or I talked in the early hours of this particular class that 35 to 35 in the both hemisphere of the latitudes the mangroves are confined to the 35-degree latitude of the both hemisphere the mangroves grows on the both western and the eastern part of the Africa the stretches into India Burma Northeast Asia then also the New Zealand some parts of it's in New Zealand but the geographical condition don't support the New Zealand because here they have written I don't know why it's written like this but Australia it's fine Australia their mangrove but New Zealand I am also not pretty sure why it's written like here don't worry New Zealand को छाड़ दिया cancel कर दिया जब भी मिलो चे कहाँ बाहर टिके होते मिलेगा because New Zealand does not support that kind of condition for the formation of the mangroves I believe मतलब I may be wrong so here you can see okay मु कहथिला टिके अथे रहबो एठी देखो बहुत ही जस्ट टिके खंडे पूरा होल न्यूजीलैंड एमती होची तो जस्ट खाली तारो नॉर्दर्न पार्ट सेटा मते डाउट थिला and that is the here you can see the world 40% mangrove in this particular region and India also mangrove the coastal region up to what Gujarat so these are the mangrove that means within the 35 in the northern hemisphere 35 in the southern hemisphere this is the mangrove distribution then why because they are what which kind of they need more warm climate why this they need warm climate they need more humidity they need more temperature they need warm water also they need what warm water that is why otherwise they could have grown or they could have found over this particular region high latitude because water temperature is not mangrove in India India रे mangrove कोटी दिखा जे सुंदरबन महानदी mangrove that is the what भितरकनिका कृष्णा गोदावरी simple गोटे टेक्निक कहबी deltas what
that is the deltas. जोठी जोठी delta मिलुची सेठी mangrove देखा जाए. That could be your Sundarban delta, that could be your Bhitarkanika. Bhitarkanika is coming under what? Mahanadi delta. Mahanadi, that is the what? Brahmani Baitarani. Then Krishna Godavari delta also there. Then Gujarat, though Gujarat does not have delta but having creeks. Gujarat is having what? Creeks, tidal creeks like Kori creeks, Sar creeks. So that is why. And the Gulf region. If some region does not have delta, if that region, particular region is having Gulf, then that will also provide the condition for the formation of what? Mangrove. Either if there is a Gulf or there is a creek or there is a what I would say the delta. These are the conditions that they will grow. Then your Goa re kahinki dekha jao because Mandavi and Juari, they are what? Estuary. Karana estuary सब अच्छी, western side also having estuary, eastern side also having estuary. So though deltas also not there, but estuaries is there, and estuary will have what? They will have mangrove. So Kaveri delta also there, Andaman Nicobar region also there because of the tidal effect. So these are the region. So India कोठी Andaman Nicobar, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, पूरा Bengal रे भी अच्छी, Odisha, Andhra Pradesh, Gujarat. So all this coast, even Maharashtra also having because Ratnagiri. When I was going through the minerals part, that time I was also talking about Ratnagiri, iron ore, manganese, so on and so forth. ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ତମର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍. ହଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେମିତି ତମର ପିଚାଭରମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଅଛି, ପିଚାଭରମ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ. ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଚେନ୍ନାଇର ସାଉଥରେ ଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି. ତ ସୁନ୍ଦରବନ, ଦ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଡାଲ ଡେଲ୍ଟା ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ. ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟାଇଡାଲ ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ. ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ये कौन कहुए ये जना जाए कौन पे रॉयल बेंगल टाइगर जी कि है ना ये कौन एंडेंजर्ड. ताले रॉयल बेंगल टाइगर कौन एंडेंजर्ड. क्रोकोडाइल भी अच्छी. भितरकनिका ओडिशा सेकंड लार्जेस्ट पैचेस इन द सब कॉन्टिनेंट. आंसर मन को पैचेस डज नॉट मीन्स ओवरऑल. पिचाभरम मु तुमको एबे कहउथली एंड होची कोन दैट इज व्हाट बेदा नारायण. ये दीटा होची तमिलनाडु. ध्यान से मन को ये दीटा क्वेश्चन पचारुची बहुत फ्रीक्वेंट पचारुची. पिचाभरम कोन पे जान जाए एंड बेदा रान दैट इज रानियम. एबे पिचाभरम शायद भितरकनिका को क्रॉस कर देची इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ मैंग्रोव एरिया. शायद तार बहुत बढ़ी जाइची कि नहीं मुझे पता नहीं. एमती न्यूज रो किछि गोटे आस्तिला मो भी निजे कंफर्म नो टिके ताको देखि देइथो कि कोन वेदर दे हैव क्रॉस्ड द भितरकनिका टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पैच इन इंडिया और नॉट. अदरवाइज यू कैन ऑप्ट आउट फॉर द भितरकनिका है ना. तो आमर सब मैंग्रोव कोठी अधिक देखा जाए बेंगल तापर केस गुजरात है ना. बट इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल पैच, इफ आई से ए सिंगल पैच, व्हाट आई सेड सिंगल पैच मतलब गोटे जगह गोटे कंटिन्यूअस बेल्ट, दैट वुड बी सुंदरबन लार्जेस्ट एंड फॉलोड बाय द भितरकनिका. बट ध्यान से मन भितरकनिका जो मैंग्रोव डाइवर्सिटी दैट इज द वर्ल्ड्स यूनिक. व्हाई? Now, if I say what is the difference between mangrove of that is the what Sundarban and Bhitarkanika, किसी difference होची तुमको सारे ये भी mangrove से भी mangrove? No, the difference is that the Bhitarkanika रो जो mangrove रो diversity of the species that is world class. तार जितने प्रकार species होची सेति कि तुमको सुंदरबन रे देखा जिबो नाही. So this is the unique difference between Bhitarkanika and Sundarban. Whereas the Bhitarkanika forest is more dense as compared to the Sundarban. The Bhitarkanika mangrove is more adaptable capacity or adhika than the Sundarban. So like these are the basic difference हम कहबा. खास करी तुमको एक क्वेश्चन पचारवा चांसेस अछि कि what makes Bhitarkanika unique from the Sundarban because of its diversity. Fine everyone, बुझा पड़ुची जा कहउची diversity of what plant species, that is the I would say flora species रो डाइवर्सिटी अधिक. बुझा पड़िबो ना डाइवर्सिटी रो मीनिंग. डन एवरीवन? सुजाता बुझा पड़ुची है ना. देन वी विल हैव महाराष्ट्र आल्सो देयर, गोवा, कर्नाटका, these regions. गोवा रे कोठी मिलिबो बिकॉज़ ऑफ मैंडोवी एंड जुआरी दे आर मेकिंग व्हाट एस्टुअरी एंड से एस्टुअरी रे देखा जिवो तुमको मो तुमको कहतली ईदर एस्टुअरी और क्रीक्स और डेल्टा और गल्फ. These are the conditions we need for the formation of mangroves. Here, like here is estuary creek is written, and we are having in Mahanadi delta. This is what deltas. Either it will be delta or you will have creek, estuary, otherwise Gulf, like Gulf of Kutch. Because of the Gulf region, the deltas are also found there. Mangrove vegetation. यदि हम देखिए Kerala is very sparse and thin. Kerala रे बहुत अल्प देखा जाए.
तो सब अधिक राइजोफोरास जहाँ भी हो जमी आम क्रिक कोरी क्रिक तुमको कही लार्जेस्ट क्रिक खास कर ये देखा जाए देन अंडमान निकोबार तुमको देखा मैंग्रोव हियर यू कैन सी द मैंग्रोव सो वेस्ट बेंगल नंबर 1 फॉलोड बाय गुजरात अंडमान निकोबार देन आसो तुम आंध्र प्रदेश रैंक ओडिशा होची 5 so Odisha rank 5 this one is the second this one is third this one is fourth and Odisha is fifth in terms of the total but in terms of single patch area Odisha is second that would be the Vitarkanika here you can see now the mangrove cover so Kara West Bengal followed by your what this one Gujarat this one third second Andhra Pradesh fourth and comes your Odisha कहाँ गए भाई 5 पॉइंट महाराष्ट्र तो अधिक अच्छी आमठू ओडिशा कौन देखो 5.4 दैट मीन्स महाराष्ट्र 6 पॉइंट केते देखो ताले हमर रैंक 6th चेक कर दो टिके दैट मीन्स वी आर रैंक 6th महाराष्ट्र आमठू अधिक दिस वन नंबर 1 2 3 4 5 6 सो 6 आसूची हमर रैंक टिके देखि दो कारण अपडेट हो जाइथो जदी जो हमर फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिदेले जना पड़ जे ताको देखिदवा नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव मैंग्रोव रो इंपोर्टेंस बहुत सारा अछि गुड्स एंड सर्विसेज जेमती लेट से हम केबा सुनामी रु बंचैबो हरिकेन साइकला विंड स्पीड को चेक करिवो सॉइल इरोजन कम हबो मानसून भलो हबो मॉडरेट दैट मींस पुनी तुमको सोर इरोजन हबो नाही लोगों को फूड मिलिबो फूड लाइक फूड कहले इन टर्म्स ऑफ फिशेस फोडर भी मिलिबो फोडर जो हमर कैटल वगैरह तांको दे वुड बी व्हाट फीडिंग एमन जाउचंती सेठी चोरुचंती सर्विस मिलुची गुड्स मिलुची सर्विस मिलुची फूड मिलुची फोडर मिलुची प्लस मटेरियल मिलुची जेमते काठ वगैरह लोक आनुचंती कि नहीं ताको आनी घर करचंती ए सब बिजनेस करचंती जहाँ भी हो दैट मीन्स सब प्रकार कहले हमको बिल्डिंग मटेरियल्स मिलुची सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग गुड्स we are also getting services we are also getting food we are also getting fodder and building materials so these are the things we are getting from the mangrove now बुझा पड़िबो नै एटा ओके बाकी तुम कह देछि फेवरेबल कंडीशन कोन दरकार एठी जेम तुम फिशेस लेखा छि क्राफ्ट्स वगैरह ई सब तो जानछ तमने मिलिबो है ना वाटर प्यूरिफाई करूची कार्बन आको ब्लू कार्बन को हाँ धांस मन को ब्लू कार्बन जाको मु कहथि कार्बन सिंक आको हाँ जदी तुम कहे ब्लू कार्बन अर्थ दैट मीन्स कार्बन जदी वाटर बॉडी किछि मतलब कार्बन सिंक करूची ताको ब्लू कार्बन भाजे दैट कुड बी मैंग्रोव हे परे दैट कुड बी कोरल हे परे दैट कुड बी ओशन हे परे तो एमन को कहे ब्लू कार्बन because why blue carbon because they are sink or they are absorbed sink by through the water body okay ब्लू कार्बन बोली कहा जाए थ्रेड्स कौन मैंग्रोव रो कौन प्रॉब्लम लोक काटी दउचंती फ्यूएल पई जालिनी पई फोडर पई ग्रेजिंग करूचंती सालिनिटी कमी जाउची फ्रीक्वेंट साइक्लोन आसुची सुनामी आसुची कोस्टल इरोजन होची सी लेवल राइज करूची लोक माने काटी दउचंती है ना हमें रिवर रे डैम तयारी कर दउचे रिवर रे जेतरो डैम तयारी करूचे सिल्टेशन जीवनी डेल्टा रो जो हमरो फॉर्मेशन कमी जीवो वाटर सालिनिटी कमी जीवो so number of issues हमको देखा जो so threads are like this okay so this is all about mangrove now we'll come to the energy sectors now this one also one of the favorite topic and energy रे इथरे किछि तुमको ऐड करे पड़ो conventional and non conventional आगे देखिबा so first see the here is the what non conventional source of energy कन्वेंशनल अर्थ कौन गोटे जोटा कि हमें इजिली हार्नेस करि परिबा इजिली हार्नेस करि होबो ताकू कहा जाय जेमते कि हमें कहबा कोल को हमें इजिली पोड़ी दे परिबा दैट इज कन्वेंशनल एनर्जी पेट्रोलियम इजिली हमें पोड़ी दे परिबा यूज करि परिबा दैट इज द कन्वेंशनल दैट इज नॉन कन्वेंशनल मींस व्हाट जोटे इजिली हमें पाइबा नहीं जेमते कि सोलर हे गेला विंड हे गेला टाइडल हे गेला सो दिस वन हियर यू कैन सी द टाइडल these are मतलब we need technology simple I would say the technology is needed जैसे wind हो जैसे solar हो geothermal biogas nuclear this we need what technology that is why they are not conventional they are pretty new form
तेणु ये माने होचंती नॉन कन्वेंशनल ताले सोर्स ऑफ एनर्जी को हम केमती डिवाइड करियो देखियो कन्वेंशनल रे जोटा तमरो कोल आसी जो ऑयल नेचुरल गैस जहाँ आसला कन्वेंशनल ये थर्मल आसीबो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रे कोन आसीबो सॉरी एटा कमर्शियल नॉन कमर्शियल नहीं कि एटा कन्वेंशनल टोटल टा कन्वेंशनल हाइड्रो एक मिनट हां नॉन कन्वेंशनल रे कोन आसीबो तमरो ये सब तमरो आसीगला न्यूक्लियर को एठी हटै देबो है ना न्यूक्लियर को हटै देबो एपटू को आसीबो न्यूक्लियर नॉन कन्वेंशनल नाउ कन्वेंशनल तुमको सर हाइड्रोटा काहे की कन्वेंशनल हे गेला न्यूक्लियर भी आउ 100 वर्ष पर कन्वेंशनल हे जिवो कोन पई जोटा इजी तापर से जो टेक्नोलॉजी ता हम पई नुवा कथा रहिबो नाही तण को न्यूक्लियर भी आउ किछि वर्ष पर कन्वेंशनल हे सो कन्वेंशनल मींस व्हाट बाबो की कोल प्रथम थर पई जब एक्सट्रैक्ट हेतला कोल दैट वाज ए न्यू टेक्नोलॉजी nobody knew about that how to extract the coal and for the first time the coal was extracted or let's say the hydropower then hydropowers everyone started to produce the hydropower isn't it so that means I would say non-conventional kale jota ki recent hechi jemti solar wind tidal geothermal these are the non-conventional aku kon darkar technology power manpower सब किस दरकार एबे देखिबा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल तो समस्त जानिछ कहले जहाँ को रिन्यूएबल मतलब करि परिबा नाही जेमति हमर पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस ये तो नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल कहले रिन्यूएबल हेई परिबो नाही एबे नॉन कन्वेंशनल को हम देखिबा है ना नॉन कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल जेमति तमरी दीज आर द व्हाट नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल बट नॉन रिन्यूएबल कहले रिन्यूएबल भी न हो तले रिन्यूएबल एक फॉसिल है पर इसो नॉन फॉसिल है पर तले रिन्यूएबल को ले जहाँ को हमें रिप्लेनिश करि परिबा दैट मींस दीज आर द नॉन रिन्यूएबल ना बुझा पड़बनी एनीथिंग यू आर एक्सट्रैक्टिंग बिलो द अर्थ क्रस्ट गोटे टेक्निक को जे जदी तमे अर्थ क्रस्ट आनु छ चाहे से कोल आनो यूरेनियम आनो किछि आनो सेल गैस आनो पेट्रोलियम अर्थ को माइनिंग करके किछि आनु छ दैट वुड बी सिंपल फंडा मु जदी कहबी जदी तुमको तमे कंफ्यूज हो छ के सर कोटा करबी कोटा कर परबिनी अर्थ को माइनिंग करके किछि भी आनु छ चाहे यूरेनियम आनो कोल आनो पेट्रोलियम आनो नेचुरल गैस आनो सेल गैस आनो टार आनो किछि आनो दे आर व्हाट कन्वेंशनल बट नॉन रिन्यूएबल तो रिन्यूएबल कोन जोटा में एटमॉस्फेयर आनु छ सेटा रिन्यूएबल एटमॉस्फेयर कोन आनु छ सोलार कोन आनु छ विंड कोन आनु छ ये ताले कोन हैला दीज आर व्हाट रिन्यूएबल आउ कोन आनु छ हमें नेचर रु फॉरेस्ट फॉरेस्ट ता कोन रिन्यूएबल धान समन को फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल ताको नॉन रिन्यूएबल भूल रे कर दबनी कारण तुमको सर फॉरेस्ट कारण फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करी हबो ना सपोज मु गछो काटी देल त आउथरे लगै देबी तो एटा रिन्यूएबल हे गेला गोटे काटीबी आ गोटे लगैबी तो रिन्यूएबल हे गेला ना बुझि परछन बुझा पड़बनी व्हाई फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल इज इट फाइन fuel wood is a renewable energy ना बुझा पड़बनी यार मीनिंग एनीवन इज हैविंग डाउट केते जल्दी हमें रिप्लेनिश करू छे रिन्यूएबल रो अर्थ कोन हाउ फास्ट वी आर रिप्लेनिश्ड दैट वन ये जो पेट्रोलियम आपको थाउजेंड्स मिलियंस ईयर लागिबो ताको रिप्लेनिश करिया तनो ये हे परिबो नै दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन आई वुड से कोन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिप्लेनिश्ड सो जोटा फास्ट हो ताको हम रिन्यूएबल जोटा बहुत मिलियंस थाउजेंड्स ईयर लागु छे ताको हम नॉन रिन्यूएबल कहबा इज इट फाइन टू एवरीवन रे बुझा पड़ु छ किछि ना बुझा पड़ुनी अरे कुछ तो बोल दो यस सर क्लियर है ना नहले पुनी कहबन कि फॉरेस्ट होची नॉन रिन्यूएबल एटा रिन्यूएबल कारण ताकू केते जल्दी से वापस आसुची सिस्टम को एबे देखा सोर्स ऑफ एनर्जी ताले कन्वेंशनल हमें देखि छे नॉन कन्वेंशनल हमें देखि दै छे है ना ये क्वेश्चन आसुची एबे देखो ताले हमें कोन है स्टेट वाइज ताले सबुठ अधिक रिन्यूएबल किए प्रोडक्शन करूची ताले सबुठ अधिक किए करूची यदि हम देखिबा गुजरात के तरह देखो 14% 11% महाराष्ट्र 12% कर्नाटक ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसुची हां तो ये क्वेश्चन आसुची तमिलनाडु कुआड गेला तमिलनाडु तो लीडिंग प्रोड्यूसर गोटे 9% तमिलनाडु यदि विंड रे देखिबा तमिलनाडु नंबर 1 आंसर मन को विंड रे तमिलनाडु नंबर 1 न्यूक्लियर तमिलनाडु नंबर 1 तो एई भेले तुमको क्वेश्चन पर सोलार रे किए सोलार रे गुजरात के दैट इज द व्हाट आज अपना शायद गुजरात अछि किंतु सेटा राजस्थान हे जिवो काना बिकॉज ऑफ द फाटला तो एटा को देखिबो अदरवाइज कर्नाटक थिबो गोटे हला तमरा इंस्टॉल गोटे हला इंस्टॉल कैपेसिटी आ गोटे हला
नाउ कहले प्रोडक्शन केते होची इंस्टॉल कैपेसिटी रे राजस्थान नंबर 1 नो डाउट बट मते लागुची प्रोडक्शन रे आज ऑफ नाउ कर्नाटक हबो सोला टिके देखि दो कने ये सब करंट अफेयर डेटा सोले अपडेट होई थाए ताको टिके चेक कर देउथो नाउ एबे देखो कंजप्शन रे सबटो अधिक कोउठ आसुची जदि तुम पचारिबा लेट्स से 100 यूनिट टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होची आधरो कोउठी अधिक खर्च होची देखा इंडस्ट्री रे केते खर्च होची 48% फॉलोड बाय एग्रीकल्चर नहीं तो तापर डोमेस्टिक तापर एग्रीकल्चर अच्छा एग्रीकल्चर रैंक थर्ड नहीं कि दैट मीन सबटो अधिक हमर इंडस्ट्री खर्च होची इलेक्ट्रिसिटी जति प्रोडक्शन होची टोटल देश रे फॉलोड बाय डोमेस्टिक देन एग्रीकल्चर थर्ड तो एटा भी गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन एई बडा क्वेश्चन ही पचारुची कि सबुठ इलेक्ट्रिसिटी कोठ अधिक खर्च होची को सेक्टर ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर रे फॉलोड बाय डोमेस्टिक देन एग्रीकल्चर ये क्वेश्चन भी तुमको मन रखियो पड़िबो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया रो टारगेट तुम जानिचो हमर जो पंचमित्र टारगेट अछि सोलार विंड फिंड ताको जहां भी तुमको देखिया पड़िबो देखो कन्वेंशनल यदि हम देखो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स सबुठ अधिक आसुची हम हाइड्रो 29% न्यूक्लियर होची हमर केते 18% 28% 29 तो कोल ताल सबुठ अधिक तुमरो कोल एंड हाइड्रो कोल सब तब नेचुरल गैस क्रूड ऑयल देन नॉन हाइड्रो और कोल सेम केमती सोलो एटा तो वाटर रो होची ना कोल केमती नहीं एटा नहीं तो सेम 29% हां 29% सेटा दिया है जे बट कोल टाको आगे रखिबे एटा ग्रीन Okay, so एनर्जी the ना first फास्ट अपन थर्मल 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 टा जोटा कोल रु कोटा आसीबो थर्मल आसीबो ना एटा हाइड्रो तो एगुड़ा को टिके डेटा जो नुआ डेटा थिबो ना कना ये सब लास्ट ईयर रो डेटा टिके अपडेट ही जाइथो टिके चेक कर दो कना एगुड़ा ही बहुत इंपोर्टेंट आ इथरो क्वेश्चन आसुची जेमती हमर एनर्जी बास्केट रे जदी हमें देखबा सबटो अधिक आसुची ताली के 80 देखो थर्मल केते परसेंट ऑलमोस्ट 80% नथिबो एटा 60% एटा करेक्ट करतबो हमर टोटल एनर्जी हम देश रे जति प्रोडक्शन होची ता धरो 60% आसुची केवल थर्मल रे कोल गैस सब मिसेगी फॉलोड बाय हाइड्रो किंतु आम देश कौन कहूची बाय 2030 वी विल प्रोड्यूस 50% ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स ओके नहीं ताल ये गोटे चैलेंजिंग हम पई दैट मींस व्हाट आउ कोन अछि हमरो ना 45% एमिशन हमें रिडक्शन करिवा जो पंचमित्र प्लान अछि देन हमर कोन 500 गीगावाट रो इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल प्रोडक्शन करिवा तो एई बळे जो टारगेट अछि तो ताकू सब पंचमित्र टाकू पढि देबो पंचमित्र ध्यान से सुनिबो पंचमित्र पढि देबो जो पांचटा टारगेट अछि जेमति तोर 2070 टारगेट कोन नेट जीरो है ना कार्बन न्यूट्रलिटी हे गेला देन हमर कार्बन जो ग्रीन हाउस एमिशन को 45% रिड्यूस करिवा केते 1 केते हमर 1 बिलियन ना केते 1 टन 1 बिलियन टन नहीं कि एटा 1 बिलियन टन रो कार्बन को हमें कोन करिवा सिंक करिवा 50% हमर नॉन फॉसिल फ्यूल्स रो आसीबो देन 500 ना केते गीगावाट रो खाली ये आसीबो जोटा 175 थिला ताको हमें पढे कि 250 कर दीजे तो एई भले जो चेंज हेची जो गुडा टिके ताको देखि दो पंचमित्र जो हमर आसी छी सेटा को टिके चेक कर दो जो प्राइम मिनिस्टर एम्बिशियस टारगेट अछि बाय 2030 कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट भी 2030 तो एटा को टिके चेक कर दो पंचमित्र वगैरह करंट अफेयर को पढि दो कना करंट अफेयर पार्ट अछि से पार्ट ताले तमे कोन कोन पढिबो करंट अफेयर फॉरेस्ट रिपोर्ट पढिबो 2021 रो फॉरेस्ट रिपोर्ट पंचमित्र टा पढि देबो है ना अदरवाइज मु कहि देबी नेक्स्ट क्लास रे न मु कहि देबी ओके ना मोर भी मने नै पंचमित्र टा भूली गेलेनी है ना तो बस आगामी देन बायोफ्यूल हम देखिबा नेक्स्ट टाइम आसबा देखो एठी तमरा रिन्यूएबल रो सबटो अधिक विंड फॉलोड बाय सोलार एटा मन रखिया पड़िबो देन आसो बायोगैस देन आसो तमरो स्मॉल हाइड्रो एबे देखो स्मॉल हाइड्रो आगे रिन्यूएबल रो आसु नथला एबे ताकू पुट करके रिन्यूएबल रो प्रोडक्शन बढ़ी गेला जा भी हो रिन्यूएबल रो सबटो अधिक आसु छै विंड देन सोलार देन बायोमास comes to the biofuel कहले कोन fuel is coming from the biotic component कहले agricultural produce जेमते कि हमें कोचे सुगर केन हे गला क्रॉप रेजिड्यू हे गला देन हमर फूड क्रॉप्स हे गला या ताकू जदी हमें कोन करिबा ना फर्मेंटेशन करके कोन करिबा ताकू फ्यूल कन्वर्ट करूचे तो सिंपल बायोफ्यूल कहले ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर टा गोटे फूड हे परे ग्रास हे परे किछि भी हे परे ए सब तो कोन ऑर्गेनिक ना तन ताकू हम कहै बायोफ्यूल ना बुझा पड़िबनी बायोफ्यूल रो मीनिंग है ना डन बुझा पड़िबो अच्छा हमें अच्छा तमे सुनिथबो
मोलासे बागासे ये तो सुनी थो ना ये सब कौन Yes, sir. सुगर केन को क्रॉस कले आसे Sugar cane cross. है ना तो मोलासेटा कौन जोटा वाइन प्रोडक्शन पे पेपर इंडस्ट्री पे पड़ोची आ बागासेटा एक्चुअली बागासेटा पेपर पे जाए मोलासेटा वाइन पे पड़े जाए एबी माने कोन करूचंती अच्छा मु ए जो मोलासे बागासे को नै कि कोन बायोफ्यूल भी करि परिबी किंतु सुगर केन जो इंडस्ट्रीज बा सुगर केन फैक्ट्री वाला देखिले मु तो वाइन इंडस्ट्री को देला परे कोन अधिक टंका मिलुची तो से बायोफ्यूल को काहे कि देबो से क्रॉप रेजिडु ए जो तमरो रेजिडुअल पार्ट और आई विल से तो वेस्ट पार्ट एटा तो रेजिडुअल ना वेस्ट पार्ट को जदि से वाइन इंडस्ट्री को दउची ताको अधिक टंका मिलुची तेणु करी से कोन बायोफ्यूल को दौ नाही दैट इज व्हाई बायोफ्यूल रो प्रोडक्शन कम जाउची इंडिया रे ना बुझा पड़िबनी इशू कोन डन कहना ताको अधिक पैसा मिलुची तो ये होची बायोफ्यूल तो बायोफ्यूल हेले कोन हबो कोन जदि हमें बायोफ्यूल अधिक प्रोडक्शन करूचे ना लेट्स से 1 लीटर हमें 20% मिसई देले लेट्स से 1 लीटर पेट्रोल आनले तो सेथरे 20% मिसई देले ताको कोन हो जे ब्लेंडिंग कहबा दैट मींस वी विल से व्हाट ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम ब्लेंडिंग ए जतरा में ब्लेंडिंग करूचे तले गैसोलीन रो परिमाण कमिबो ना बढ़िबो कोन हबो जो गैसोलीन ता कमी जिवो ना बुझा पड़िबो एटा पेट्रोलियम ता गोटे कोन गैसोलीन एबे जति से जो गैसोलीन रे जेतबे आमे बायोफ्यूल ऐड कर दबा तार कंसंट्रेशन कमी गेला दैट मींस हमर पोल्यूशन कमी जिवो लेट्स से 1 लीटर आमे 20% ऐड कर देले कोन बायोफ्यूल बाकी 80% कोन रहला गैसोलीन बा पेट्रोल दैट मींस एबे सस्ता तो हिजबो चीप हिजबो ना इट वुड बी चीप प्लस पोल्यूटेंट भी कमी जिवो एंड इट वुड बी हेल्दी आल्सो एटमॉस्फेयर पई ना बुझा पड़िबनी काहे कि हमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन करूचे प्लस एनवायरनमेंट भी क्लीन रहबो केमती देखो जो जो आमे कहबा जे फूड क्रॉप हेजो बा क्रॉप रेजिडु हेजो लेट्स से आमे कहबा रेजिडुअल पार्ट क्रॉप रो जेमती हमें धान नडा माने कोन आफ्टर हार्वेस्टिंग द व्हाट पैडी से स्ट्रॉ को हमें फिंगी दउचे से स्ट्रॉ को नै कि हमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन करि परिबा बिकॉज़ दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट तो फास्ट जनरेशन एबे देखबा टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल फास्ट जनरेशन कोठो आसीबो बेसिकली स्टार्च आसीबो सुगर आसीबो वेजिटेबल ऑयल्स ए सब आसीबो एनिमल फैट्स फूड रो बेसिकली हम कहबा फास्ट सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कोठो आसीबो ना बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द हस्क जेमते राइस हस्क हे गला ये सब प्लांट हे गला प्लांट एगुडा देखो साधारणतः फूड क्रॉप्स रो जदि मु सिंपल कहबी इट वुड बी फ्रूट्स एंड क्रॉप्स रो आसीबो एठी आसीबो तमरो प्लांट एंड हस्क रो बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एल्गी रो आसीबो देखबा कोड आसुची यस एल्गी इट्स कमिंग फ्रॉम द एल्गी फोर्थ जनरेशन अछि कोन आर्टिफिशियल प्लांट बनैबा में कोड गला देखबा अछि कि नहीं आर्टिफिशियल कहां गए अच्छा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जर्व्ड एंड stored highly amount of the carbon obviously सेटा आर्टिफिशियल गला तो आर्टिफिशियल जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दबा तो लेट्स से जने घास चाष करी भी इनकम करि परिबो ताले बे बिकॉज़ ताको हमें कोन करबा बायोफ्यूल रे कन्वर्ट करते परिबा डन एवरीवन तो बायोफ्यूल रो बुझी परिबो बे ताले बेनिफिट्स कोन हो बायोफ्यूल ना हियर यू कैन सी द बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 जो थरे मु एबे कहतले 20% ब्लेंडिंग हबो है ना ताले फॉसिल फ्यूल बेस्ड बाइट केबे 2030 वर्तमान केते होची 5 to 7% ब्लेंडिंग होची वंस यू जस्ट इमेजिन इफ 20% ब्लेंडिंग विल स्टार्ट पर लीटर ताले तेलो कमी जिवो it would be what environmental friendly हिजो so this is the benefit second generation third generation ये तो क्वेश्चन पचार करे बायोफ्यूल बेनिफिट कोन all this thing so this would be this much for today कारण आई मो लैपटॉप रो चार्जर टाणे पे भूली जाई छी আজি otherwise I could have run this one और 10-15 मिनट नहीं सारी था